आपका क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 kg lying on the surface of the earth. They have given you mass of the earth, that is 6 into 10 to the power 24 kg. Here they have given radius of the earth 6.4 into 10 to the power of 6 meters. Here they have given g, that is gravitational constant, that is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Now we have to find out what? The force of gravity. That means F is equal to, we know that क्या होता है हमारा कैपिटल G m1 into m2 by r square. R is the क्या होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन देम, and m1 and m2 are the two masses. Now we will put the values here. What we will get? F is equal to G. G they have given 6.7. 6.7 into 10 to the power of minus 11 into m1 is 150 into m2. M2 is the mass of the earth now. 6 into 10 to the power of 24 by r square. That means the radius of the earth. That is your 6.4 into 10 to the power of 6 meters. That means whole square. Now, अब आपको क्या करना है? 6.7 into 150 into 6. So 150 into 6 is what? 900. So that means 6.7 into 900. Or you can say आपका कितना आ रहा है? 9 से इसके सब मल्टीप्लाई करो. 9 7 जा 63. 6 carry 9 6 जा 54. 60. You will get 60.3 into 10 to the power of 2. 10 to the power of 2 किसका है? 900 का है ना. 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया. You will get this, or 0 0 we have written this, into now 10 to the power of minus 11 into 10 to the power of 24. Now by 6.4 into 6.4 वो कितना होता है हमारा? That we will do 6.4 and 6.4. 16 25. Next 24 2 carry 36 38. 6 9 0 and here it will come 4 4096. We will write here 40.96 है ना. And 10 to the power of 6 into 2 is 10 to the power of 12. अगर हम उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 to the power of minus 12. Now अब देखो क्या आ रहा है आपका 60.3 by 40.96 है ना. That is equal to into, अब देखो कितना है? 11 and 22 is 23 है ना. 12 and 11 is 23. 24 and 2 is 26. 10 to the power of 26 minus 23. Now यहां पर देखो एक पॉइंट है. वी विल इसको निकाल दो और नीचे आपका 10 आ जाएगा. यहां पर देखो 2 पॉइंट है, इसको निकाल देते हैं. वी विल गेट अगेन 2 पॉइंट्स देयर. अब कट कर दो 0 और ये. तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6030. तो हियर इट विल कम 6030 डिवाइडेड बाय 4096 into 10 to the power of 20. 26 minus 23 is 3. Now इसको डिवाइड कर दो.
देखो क्या आ रहा है आपका, इट विल कम एज 6030 डिवाइडेड बाई 4096. नाउ इट विल गो एज 1. तो 4096 माइनस करो, देखो 4 and here it will come as 3 and 9 and 1, 1934. Now we will put point, ये आपका 0 हो गया, तो now it will go as 4 times. तो 24, 2 carry, 36, 38, 3 and 16. आपका देखो माइनस करो, you will get 6 here and 13 minus 8 is 5. 12 minus 3 is 9, 8 minus 6 is 2, 2, 9, 5, 6 and 1 more 0. तो it will go at around 7 times. तो आपको दो वैल्यू लेने की जरूरत है. तो देखो आपका क्या आ रहा है, 1.47 into 10 to the power of 3. नाउ मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है आपका, 1, 4, 7 and 3 zeros, 1, 2 and 3 zeros. डॉट के बाद कितना है डिजिट्स, 2, 1, 2. तो नाउ वी कैन से इट्स अ 1470 न्यूटन्स. दिस इज योर आंसर.